theory. This meeting is being recorded. So now let's move ahead. And today we need to start a new topic, which is one of the most important topic, and that is what you call uncertainties. If examiner do not ask question related to base units, he will or he has to ask a question related to uncertainty to see how uncertainties are solved. चलें समझते हैं इसे. Let me pen my screen. Okay. So here if we say that we need to understand first what error is. होता क्या है error? तो error, anyone? आप बताना चाहेंगे? How do you define error? Mics are unmuted. You can unmute yourself. Yes. How do you define error? Synonym is mistake, or when I ask how do you define, definition कोशिश किया करें बताएं. How do you define error? No one. बस एक जवाब था, mistake. They can be either big or too small and not accurate, Big not precise. or small. Okay. Beta, we say error is something which is the difference between the measured value and actual value. For example, if I design an experiment through which I am measuring the value of acceleration of free fall, and I get an answer of 9.79 ms minus 2. Okay, what is the actual value of acceleration of free fall? अर्थ के लिए what is the actual value of acceleration of free fall? 9.8. Ifra, in A levels it's 9.81. Yes, Urub. In AS, in A2, you have to use the value as 9.81. So what is the difference? 0.02 ms minus 2. This is error. So the difference between measured value and actual value, अगर आप actual value में से measured value को minus कर दें तो जो भी answer आएगा, that is what you call an error. ठीक है? So this is how we will define an error. Once again telling you, if we are talking about A levels, we have to use the value of acceleration of free fall as 9.81. But एक चीज और include कर लिएगा, and that is use the units ms minus 2. Okay, units are must things to have as far as my subject, that is physics, is concerned. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. Cool. Now let's write down the definition. The difference between measured value and actual value is called an error. ठीक है? Cool. Now, as you see, the classification of error, there are two different types of errors.
namely systematic error and random error. Systematic error है और random error है. तो systematic errors क्या होते हैं? Systematic errors are those errors which are made by systems, which are made by instruments due to the incorrect or due to the fault in the instrument. And how do we identify? What is the biggest identification of systematic error? They remain constant. Change nahi hota. For example, if you're talking about the zero error of the micrometer screw gauge, it will remain same. Bhale, you measure the diameter of marble using that micrometer screw gauge, or you measure the diameter of wire using that screw gauge. If that micrometer screw gauge is having, let's say, an error of plus 6.2 millimeter, every time it will be having the same error. So one of the biggest identification of systematic error is their value is roughly constant. Okay? So let's write down the definition of systematic error. Okay. An error which arises due to the wrongly calibrated instrument or fault in an instrument is called systematic error. Systematic error की value roughly constant रहती है और कुछ examples बता दी like zero error is one of the example of systematic error. Understood? Yes, sir. Cool. वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछी गई है बट पूछी गई है जी. Did somebody ask something? Okay. So I can see some new students, and if you are having the class for the first time, the Salman Ashmi, he's the one who needs to be contacted if you want to get registered. Just send him a message on WhatsApp. Cool. Apart from systematic error, we have another type of error, that is what you call random error. And what is the difference between the random error and systematic error? These are the errors which maybe or the values of these errors are not roughly constant. They vary. One of the best example of random error is parallax error. It depends upon my line of sight. For example, let me show you one of the lecture of O-levels in which the parallax error is shown. So see, if parallax error क्या होता है? The error which rises due to incorrect line of sight. So as you can see, this is the actual reading. But if you are looking at the ruler from this angle, you are not measuring 50 centimeters, you are measuring 55 centimeters. ठीक है? आप क्या measure कर रहे हैं? Roughly 55 centimeters. Similarly, you change the angle of sight. And now you are measuring 45 centimeters. So, वो error जो कि आपकी line of sight से के साथ change हो. अगर मैं इस angle से देखता हूं, I am measuring 60 centimeters. So error is not same every time. The value of error is not constant or not roughly constant. If you're talking about that error whose value is not constant or roughly not constant, that is what you call random error. Okay? So one of the best example of random error is parallax error.
An error which results reading being scattered around the accepted value. मतलब जो actual accepted value है उस accepted value से बहुत scattered result आ रहे हों और error constant ना आ रहा हो, that is what you call random error. ठीक है? One of the best example of random error is parallax error. Understood? So we just gave the classification of error and we explained both of the errors. Can we say it can be caused by environmental factor? Yes. Different environmental factors. ठीक है? तो you can say that. बस identification का आयान जो मैंने आपको तरीका बताया है, if the error is roughly constant, classify it as a systematic error. If it is not, classify it as a random error. Cool. Let Sir, me know can you when repeat? you are done. जी बेटा. सर आप रिपीट कर सकते हैं जो भी आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था. I said, look at the error. If the value of error is roughly constant, that is a systematic error. If the value of error is not constant, it changes every time, that means it's a random error. ठीक है? Sir, another example of random error क्या हो सकती है? सबसे बेस्ट तो पैरेलक्स एरर ही है. Another example of random error could be a human Sir, reaction human error. error. Yeah, human reaction error. हाँ, human error हो सकता है. Because if you give stopwatch to the students, not every student will be having the same accuracy. जो reaction time है उसमें सबका different होगा. तो this can also be one of the example of random error. Cool. Let me know when you are done. When you have written down, let me know. Cool. Done, sir. Okay, Fra. Yes, Rabia. This is what we said. Human reaction error can be one of the random error. Thanks for your input. Okay, Ishbar. Chale, let's move ahead. Now, we need to talk about some of the concepts known as precision and accuracy. Anyone have an idea what precision is? What accuracy is? Sir, it's basically precision is basically how close your measurements are to each other, और accuracy Okay. is basically कि एक जो true value होती है जैसे कि gravity के 9.81 उसके around values कितनी close होती हैं उसका accuracy कहते हैं. I don't think so. ये जवाब जो आपने दिया है इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता था. क्या बात है? It's basically how close your आयान. measurements are to value. Exactly. Precision is how much closer the values are with each other. And accuracy is how much closer the values are with the true value. Example से समझाता हूँ. The actual value of gravity is 9.81. What are accurate answers? 9.8, 9.82, 9.79. These are accurate answers. ठीक है? Similarly, what are precise answers? It could be 9.71, 9.72, 9.70. These are precise. In fact, ये भी आपस में precise है. So how much closer the points are with each other is precision. How much closer the points are with each other is accuracy. Like ये जो 3 points हैं, ये accurate भी हैं because they are closer to the exact value. And ये precise भी हैं because they are closer with each other as well. Understood? How close the actual value? Yes, Amal. Accuracy is defined as the factor of being exact or correct. Yeah, you can say that, Rabia. Cool. So let's write down the definition. I got electric current. So precision tells how much closer are
the points with each other, and accuracy is how much closer the points are with accurate answer. सर Yes. आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें से कोई एक रीडिंग एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज ना हो? Yeah, I'll give you. कुछ एग्जांपल शायद मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लान नहीं की हूँ. प्रिसाइज और एक्यूरेट ना हो, ये पूछा है आपने. एक्यूरेट हो और प्रिसाइज ना हो. एक्यूरेट हो प्रिसाइज ना हो. एक्यूरेट हो प्रिसाइज ना हो, ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा. अभी देखिएगा यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पर बताए हुए हैं. ये देखें, ये एग्जांपल हो गई. दीज आर क्लोजर बट दीज आर नॉट प्रिसाइज. अभी इन ग्राफ्स पे आता हूं तो समझाता हूं मैं. ठीक है. ओके. So apart from the definition, I saw one of the MCQs on precision and accuracy by the graphs like this, or by the distribution of the points like this. So let me explain कि किस तरीके से ही होगा. Rabia is saying accuracy is defined as the factor of being exact or correct or having freedom of any error. इसका क्या मतलब है रबिया, ये थोड़ा समझाए मुझे. Example of precision is daily life is the weighing scale. Okay. Can you further explain? You can unmute yourself so that you can deliver your concept clearly. Yes, Rabia. Yeah, so I was saying as like the weighing scale is like gives readings of like different like 17.4, like 17, 17.3, like every time we try it on. So like the mass is precise, but like it's not very accurate. So it's like a precision of how much where like they're weighing that. If I'm You not can say that. correct though, but yeah. You can say that. Okay. Thank you. So this is what we talked about, the precision and accuracy. Ab, let me take you towards one of the MCQ or the concept of MCQ asked. I don't know in which paper, but I'm sure about it कि मैंने वो किसी पेपर में देखा था. That is why I included in my lecture, because मुझे लगता है आगे भी ये सवाल कहीं पूछा जाने वाला है. So the red point is the accurate answer and the black points are the measured answers. So how do you think these points are closer with each other, as well as these points are closer with the accurate answer as well? So they are both accurate and precise. And the graph of accurate and precise points is, this is the accurate answer. And see, all the answers are close to each other as well as close to the accurate answer. So you can say this set of data is both accurate and precise. Just ऊपर यहाँ पे heading डाल दें. अच्छा, one more thing. The same as I designed workbook for you guys for O levels. AS में भी मैंने workbook design किया. I think Iman got the workbook. Iman, you got the workbook? Yes, sir. Cool. So in the workbooks, whatever we are doing right now, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट होती है, बट उसके अंदर मैंने ए लेवल्स में पास पेपर नहीं डाले हैं, बिकॉज आपने देखा 3 क्लासेस हमने एक छोटे से टॉपिक के पास पेपर किए. तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पास पेपर्स. अगर उनकी प्रिंटिंग में वर्कबुक में डालता है, दैट विल बी टू मच कॉस्टली. तो आई नॉर्मली रिकमेंड यू टू हैव रीड एंड राइट पब्लिकेशंस टॉपिकल पास पेपर्स. ठीक है. तो जस्ट राइट इट डाउन इफ यू हैव वर्कबुक, एंड दैट इज accurate and precise. मतलब this set of data is both accurate and precise. The points are closer with each other, or the points are also closer with the accurate answer. ठीक है. Now, what about this one?
व्हाट डू यू थिंक? ये सेट ऑफ डेटा क्या है? इज इट एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, प्रिसाइज और इनप्रिसाइज? Accurate but accurate not but not precise. precise. Accurate. Yes, Amal said the same. Accurate but not precise. The answers are closer with each other, are not closer with each other, but they are close with the accurate answer. Yes, Urub. ठीक है. So they are accurate and imprecise. So the graph is a bit scattered. यहाँ पे देखें बहुत शार्प ग्राफ था, बट यहाँ पे एक्चुअल आंसर से ग्राफ थोड़ा सा स्कैटर किया है एंड द पॉइंट आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर एज दे वर हियर. ठीक है. नेक्स्ट, ये इनकी तो अपनी ही अलग दुनिया है. यस एफ्रा. नॉट एक्यूरेट. Precise but not accurate. यस अमल. ओ अमतुल, सॉरी. दे आर नॉट एक्यूरेट बट प्रीसाइज. दे आर नॉट एक्यूरेट बट प्रीसाइज मतलब आपस में एक दूसरे के करीब करीब है, बट दे आर नॉट क्लोज टू द एक्यूरेट आंसर. So we write precise and inaccurate. Okay, and the last one, they are neither precise nor accurate. ठीक है. अच्छा, ग्राफ तो देखें इसका. एक्यूरेट आंसर यहाँ है. इन्होंने अपनी ही अलग दुनिया बनाई हुई है जिसका एक्यूरेट आंसर से कोई ताल्लुक नहीं है. बट हेयर इफ यू सी, the points are neither closer to each other or neither they are too much close with the accurate answer. These are imprecise and inaccurate. ठीक है. So this is what we discussed in this section. मतलब this was the introduction of errors. ठीक है. And now we need to move towards uncertainties. But what if, but sir, what if a few answers are close to the true value and the rest are not? So altogether, the set of data will still be considered as imprecise. ठीक है. क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के करीब नहीं है एंड सब एक्यूरेट आंसर के भी करीब नहीं है. तो अगर आप ऑल टुगेदर एक सेट ऑफ डेटा को देख रही हैं, दैट विल बी इनएक्यूरेट एज वेल. ओके, आगे बढ़ते हैं. Shall we move ahead? Yes, sir. Cool. Now, one of the I told you, if examiner do not ask question from chapter 1 that is related to base units, he would surely ask the question from uncertainties. In fact, जब मैं आपको पास पेपर करवा रहा था, पेपर 2 के स्पेशली, तो देयर वर सम क्वेश्चन जिनको मैं देखता था, वो बोलता था ये अभी हमने नहीं पढ़ा. दोज क्वेश्चंस वर फ्रॉम अनसर्टेनिटी. तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, येट इट मेक्स ए स्टूडेंट कंफ्यूज्ड अ लॉट. तो तरीके से समझिएगा. द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर is
1000 plus minus 50 ohms. Okay. Here, 1000 is the actual value and plus minus 50 is the uncertainty. मतलब समझिएगा. If you go to the market and you say to the shopkeeper that give me a resistor of 1000 ohms, he'll give you the resistance of 1000 ohms. But when you measure the resistance of this resistor using ohm meter, so वो रीडिंग आपको 1000 नहीं मिलेगी. एरर क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी क्या बता रही है, that value will or that value may differ by the factor of minus 50 means 950, 2 plus 50 means 1050. Yani, if I will measure the resistance of 1000 ohms resistor, I'll get an answer in between 1050 to 950, anywhere in between. So, what I'm getting, an uncertain answer in the range of minus 50 ohms to plus 50 ohms. Okay? That is what an uncertainty is. If you ask about what is this is the actual value. If you ask about what is this is the uncertainty. अब uncertainty को लिखने के दो तरीके हैं. Method number 1, you can write uncertainty like this. So this is resistance and this is how you write uncertainty in resistance. Either you can also write uncertainty as this. This is actual value of resistance. This is uncertainty in resistance. Okay? So I normally use this method to represent uncertainty. So here we are talking about resistance. The way to show the uncertainty in resistance is sigma R or uncertainty in R. Understood? Yes, sir. Cool. So if we classify uncertainties, there are 3 major types of uncertainty. Basically, there are 2 major types of uncertainty. These are these 2. Okay, percentage uncertainty, fractional uncertainty से ही बनती है. So one of the uncertainties is called absolute uncertainty, and you can also call it actual uncertainty. Okay. While the second one is fractional uncertainty. Okay. Yes, sir. Cool. So first let's talk about absolute or actual uncertainty. Look at your equation. If your equation is having the terms which are having addition or subtraction, then you go with the concept of absolute or actual uncertainty. Matlab, let's have an example. Let's say I have an equation as x equals to y plus z. Okay? So this equation carries addition or subtraction operators. Okay? So if I write down the uncertainty of this equation, I will write it down as uncertainty in x equals to uncertainty in y plus uncertainty in z. Okay? So we only use the concept of fractional or absolute uncertainty when we have either a subtraction equation or an addition equation. So the other one is uncertainty in x equals to uncertainty in y plus uncertainty in z. ठीक है बेटा, तो ये भी आप इस तरीके से लिखेंगे. क्लियर है यहां तक? यस हमजा. Clear है. वो गलती से मेरे हैंड रेज हो गए थे सर, वो थम्स अप करना बात चाह रहा था मैं. कोई बात नहीं.
बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन. मैं चाहता था आप लोग सवाल पूछें कि ये इक्वेशन में तो माइनस है, आपने प्लस क्यों किया? गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया है. वाई? यस रबिया, यू नीड टू ऐड समथिंग. यस अमतुल. Sir, that's because final answer के ऊपर You got muted. Okay, so no matter what, whenever you talk about uncertainties, they are always added. Write it down somewhere in the notebook. दीवार पे कहीं लिख लो, ठीक है? हाथ पे लिख लो कहीं पर. अनसर्टेनिटीज किसी भी किस्म की हो, हमेशा ऐड होती हैं. Whether your equation is having plus or minus or multiply or divide, you have to add each and every uncertainty. Okay, so that is why I intentionally wrote for plus here. Okay, so the concept of absolute uncertainty is used if the equation has terms which are either adding or subtracting. That is what you call absolute or actual uncertainty. The symbol of uncertainty in this. बट ऐसे मजा नहीं आया. एक सवाल करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट और एक्चुअल अनसर्टेनिटी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए. आर यू रेडी? शुरू करें सवाल. Yes, sir. Cool. So I designed one of the question just to reflect the idea of absolute or actual uncertainty. So let's read the question. The internal diameter of the cylinder is D1. So I may have a cylinder. Let me see. ये मैं लेकर आया था. एक एक्सपेरिमेंट मुझे ओ लेवल्स वालों को करवाना है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिलेंडर. So what is this? This is the outer diameter. And what is this? This is the ये वाला part. This is the internal diameter. ठीक है? And इसी तरह मैंने आपको सिलेंडर सामने क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाया हुआ है. So that internal diameter that is being represented here as D1. The internal diameter is D1. So value of D1 is 5 plus minus. ओह, ये क्या हुआ? एक मिनट रुकें, इसको इसकी क्रॉपिंग हिल गई. यस. Okay. 5 plus minus 0.2 centimeter. How do we read it? This is the actual value of D1 or internal diameter. और this is the uncertainty in D1. तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ. This is D1 while this is the uncertainty in D1. ठीक है? Cool. चले. And the outer diameter is D2. 7 plus minus 0.2. तो 7 हमारे पास है D2 and this is the uncertainty in D2. ठीक है? So this is D2 and this is the uncertainty in D2. Find the actual value of thickness. He wants us to find thickness and its uncertainty. तो मुझे बताएं, if I want to find thickness, how do I find thickness? What should be the way to find thickness? कैसे निकालो?
Any inputs? Yes, Amatul. minus internal diameter. क्या करेंगे? Repeat करें. External minus internal diameter of the cylinder. Okay. Amatul is saying if we subtract both the diameters, we can find thickness. How many of you can agree with this? Or you can also tell me if you disagree. Okay. Ifra is also saying D2 minus D1. Yes, Madi. Actual values of D2, D1. Okay. Ashbar. फिर divide by 2 भी करना पड़ेगा. Yes. This is what I want to hear. क्यों divide by 2 करेंगे? बेटा, if I subtract D2 and D1, so I am left with this length and this length. I need twice of thickness. In order to have just the thickness once, I have to divide the final answer by 2. ये बात clear हुई? जी सर. What about the others? Okay, Fra. Let me explain once again, Amal. Amal, I'm saying if I subtract D2 and D1, that means ये जो लेंथ है ये लेंथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बट अभी भी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बच रही है. दैट इज ट्वाइस ऑफ थिकनेस. एक थिकनेस यहां पर आ रही है, एक थिकनेस यहां पर आ रही है. तो थिकनेस एंड थिकनेस, इट इज ट्वाइस ऑफ थिकनेस. तो यू कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ थिकनेस इज D2 minus D1, or you can write it as thickness equals to D2 minus D1 upon 2. Understood, Amal? And the rest of you all? Clear हो गया ये? Perfect. So, thickness is equals to D2 minus D1. Right now we are finding the actual value. So I have to use the actual value. What is the actual value of D2? 7 centimeter. And D1, 5 centimeter. ठीक है? So 7 minus 5 upon 2. And we get an answer of 2 upon 2. 1 centimeter is the actual value of thickness. Yes, Rabia. Yes, Ifra. Now, we will find out the uncertainty in thickness. मुझे एक बात बताएं, ये नंबर है, क्या इसमें कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है? ता कयामत 2 की वैल्यू 2 ही होगी, कभी चेंज नहीं होगी. ऐसा नहीं हो सकता 10 साल के बाद न्यू जनरेशन जेन अल्फा 2 को बोले 2.1. नॉट पॉसिबल. इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी. तो समझाने का मतलब ये है कांस्टेंट्स में अनसर्टेनिटीज नहीं होती. ओके, कूल. तो just ignore this part, and if you look at the equation कैसी है? प्लस माइनस की इक्वेशन है. यानी you can apply the concept of absolute or actual uncertainty. And how we write down the definition? Uncertainty in thickness equals to uncertainty in D2. हमेशा uncertainties add होती हैं plus uncertainty in D1. Now, what is the uncertainty in D2? 0.2. And what is the uncertainty in D1? 0.2. So, 0.2. Acha, one more thing. I forgot to mention one thing. And that is, whenever you write down uncertainty, plus minus लिखना लाजमी है. Because uncertainties are both positive and negative. So, plus minus 0.2 centimeter for the uncertainty of outer diameter,
and 0.2 centimeter for the uncertainty of inner diameter. And both are having the unit system centimeter. तो वो बाहर लिख दिया हमने. So what will be the final answer? Plus minus 0.4 centimeter. Understood? So we found the uncertainty as well as the actual value. Yes, Rabia. Ab, examiner wants or expects from us to write down the final equation. How do we write down the final equation? We write down the final equation just as he gave the values. हमें इसी फैशन में अपनी फाइनल इक्वेशन को लिखना है. कैसे? ऐसे. Final equation will be t equals to, what about the actual value? 1 1 plus minus 0.4. plus minus 0.4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब दो बातें बताना चाहूंगा आपको. पहली चीज, आपकी बोथ एक्चुअल वैल्यू और अनसर्टेनिटी के यूनिट सिस्टम सेम होने चाहिए. बोथ शुड बी इन सेंटीमीटर. पहला. सेकंड थिंग, आपके एक्चुअल वैल्यू और अनसर्टेनिटी दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होने चाहिए. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते. नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है. इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1. ठीक है. तो फिलहाल ये दो बातें याद रखें. एक बात और आती है, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो आगे के सवालात में वो बात मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ. Up till now, the question is in front of you. If you have any question, this is the time to ask. Yes, you have to convert unit amal, have the unit system same for both actual value and uncertainty. But अगर दोनों सेंटीमीटर में, you don't need to convert. अगर दोनों मीटर में, you don't need to convert. But एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में, तो you have to convert any one of them so that दोनों का system of unit same हो. Okay? Yes, sir. सर लेकिन फर्क तो नहीं पड़ता कि Sorry? अगर हम कन्वर्ट करें या ना करें. दोनों की सेम होने चाहिए. अच्छा सही है. ठीक है. हाँ, यस. अगर आपने दोनों को सेंटीमीटर में लीव किया है, सही है. दोनों को मीटर में लीव किया है, सही है. बट एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में, दैट इज द प्रॉब्लम. बिकॉज ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर आप दोनों का सिस्टम लिख रहे हैं यूनिट का, तो बोथ यूनिट शुड बी सेम. इसका भी और इसका भी. ठीक है. यस सर. Cool. तो सही है. लेट मी फाइंड maybe if we have questions related to this concept in past paper. So scalar and vectors आ गया. Most of the time I get some of the questions that, sir,
How do we find where you upload your recordings? How do we find where you upload that daily lecture in PDF form? So if you are the part of the group in which all the registered students are there, you can go to the group description like this. This is one of the group description of one of my WhatsApp group. You can find each and every important link, PDF bank, YouTube वीडियोस की, और इसके अलावा क्लास गूगल क्लासरूम लिंक, हमारी जूम की क्लास का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल सकती हैं। ओके, तो आई हैव टू लुक कि हमारे डोमेन का सवाल कहाँ है। सर ये आपको Yes. ग्राफ बनाने को क्यों नहीं देता ना क्वेश्चंस में, लाइक एक्यूरेसी और प्रिसिजन के? नहीं, अब नहीं होते, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर दैट कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास नहीं है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, मे बी इसके अंदर हमारे पास कोई हो। अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल करेंगे। नहीं, हाँ, चलो वापस चलते हैं यहीं पर। ओके, the other type of uncertainty, that is what you call fractional uncertainty. And what are the conditions of applying fractional uncertainty? Condition number 1, your equation should be consisted of multiplication and division operators. ठीक है, जस्ट लाइक वहां पे कंडीशन क्या थी, प्लस माइनस की इक्वेशन हो तो एब्सोल्यूट या एक्चुअल अनसर्टेनिटी आप यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड की इक्वेशन होगी तो हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ओके, so for example, this is equation x equals to y multiplied by z. So how we write down? Since it's fractional uncertainty, we have to show the fraction. तो फ्रैक्शन कैसे शो करेंगे? Uncertainty in x over actual value of x, ठीक है, equals to plus minus uncertainty in y over y plus uncertainty in z over z. So I told you, whenever you write down uncertainties, there are always added. तो भले वो absolute या actual uncertainty हो, भले वो fractional uncertainty हो, just show the fraction and you have to add. And since uncertainty is in both plus and minus, so you write the sign for both positive and negative. Similarly, they are dividing. We don't care, bro, if you are adding, subtracting, multiply, divide. If you are uncertainty, extremely sorry, you should be added. Write it somewhere. ठीक है, बोलना नहीं है ये। So uncertainty in x over x equals to plus minus uncertainty in y over y plus uncertainty in z over z. Understood? So this was the general concept. Okay, जल्दी से बताएं, फिर इसका सवाल भी करते हैं। If you have any question, you can ask. If you are clear, या तो चैट बॉक्स में लिख के माइक ओपन करके बता दें, थम्स अप कर लें। Cool. चले आगे बढ़ते हैं। The mass of the liquid is 500 plus minus 10 kg. What is this? This is actual mass.
and this is the uncertainty in mass. Uncertainty की definition दिखा दें, कोई definition बताई नहीं है मदी. These are basically the values which makes your answer uncertain by certain factor. जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देख लो, मतलब एक्चुअल वैल्यू मास की है 500 किलोग्राम, ठीक है. अच्छा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वैल्यू, तो मास है हमारे पास 500 किलोग्राम एंड द अनसर्टेनिटी इन दैट मास इज 10 kg. इट्स वॉल्यूम इज, ये एक्चुअल वैल्यू है वॉल्यूम की एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, ठीक है. फाइंड द एक्चुअल अनसर्टेनिटी ऑफ द डेंसिटी एंड इट्स अनसर्टेनिटी. एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेंसिटी चाहिए और उसकी अनसर्टेनिटी चाहिए. Okay, Iman is saying it's 5 kilogram per meter cube. Let's see, Iman. Formula for density is all we know, mass over volume. Here we have to write the actual values. Mass is 500, volume is 100. Yes, Iman, it's 5. 5 kilogram per meter cube. Or 5 kgm minus 3. If you use the base units concept. Now, uncertainty in density. Since our equation is multiplication and division equation, so uncertainty in density over actual density equals to plus minus uncertainty in mass over mass plus uncertainty in volume over volume. Uncertainty in mass क्या है? 10 किलोग्राम. Over actual mass क्या है? 500. Plus uncertainty in volume is 3 and actual volume is 100. So what do we get as an answer? 5. Let me see. It's 10 divided by 500 plus 3 divided by 100. 0.05. ठीक है. So 0.05 what? ये आ रही वैल्यू. What do we need? Uncertainty. तो अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए तो अनसर्टेनिटी विल सिंपली से ये रो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए, ठीक है. तो इट्स 0.05 मल्टीप्लाई बाय रो. 0.05 रो की वैल्यू आई थी 5. ये वाली डेंसिटी की वैल्यू, एक्चुअल डेंसिटी. तो मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स 0.25, ठीक है. तो अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज प्लस माइनस 0.25 kg m minus 3. सर ये ठीक है. ऊपर वाला पार्ट समझ नहीं आया. Why did you कौन सा वाला multiply part? by 5? 1 2 3 4 कौन सा Part स्टेप? 3. Part 3. फर्स्ट 3. Part 3. ओके, पार्ट 3. ओके बेटा, पार्ट 3 में क्या किया है? लेट मी राइट इट डाउन. इट्स दिस. यू जस्ट नीड दिस वैल्यू. तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ये डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है. All right.
So this is how. Up we need to write down the final expression. And what is the final expression? Density equals to actual density की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी डेंसिटी क्या है 0.25 जी m माइनस 3. दो बातें बताई थी अप टिल नाउ. दोनों के बेस यूनिट सेम हो या ये दोनों के यूनिट सेम हो. एक्चुअल वैल्यू के भी kgm माइनस 3 है, इसके भी kgm माइनस 3 है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ बोथ शुड बी सेम. तो यहाँ पे देखें 1 SF है और यहाँ पे 2 SF है, तो दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर बराबर करने होंगे. कैसे करेंगे बराबर? ये देखें 5.0 प्लस माइनस 0.25 जी m माइनस 3. ठीक है, क्लियर अप टिल नाउ? Clear, This is sir. the whole question. Clear है sir. Cool. So if anyone have a question, you can ask. Amal, you are saying third step. Third step कौन सा? Are you talking about this one? अच्छा, क्लियर हो गया. ठीक है, ठीक है. Okay. So let me see how many of you are in the class. Amal, Amatul, Ajbar, Ayan, Dina, Iman, Ifra, Madi, Hamza, Rabia, Ratiba, Rawaha, Sajjad, and Talha, Ali Talha Ahmed. Everything clear? Clear है भाई? Clear, sir. Perfect, Yes, sir. perfect. sir. जी बेटा. Okay, okay. So thanks a lot for your time and इंशाल्लाह मंडे की क्लास में हमारी मुलाकात होती है. एंड ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इफ यू गाइस नीड वर्कबुक, सेंड मैसेज टू सर मुस्तकीम, ही विल अरेंज डिलीवरी फॉर यू गाइस. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. अल्लाह अल्लाह हाफिज सर. हाफिज. Allah Hafiz, sir. हम लोग alternative पढ़ेंगे.